How are you all guys? Welcome and welcome back to my another English practice video. Okay, so I am an English learner and I'm learning English. And on this channel I share my English journey, how I learn English and how I practice English, how I improve myself every day. And in today's video I'm going to speak English slowly. Yes, I'm going to speak English slowly, and I'm alone right now. I prefer to speak English when I am alone. Okay, so in today's video, I'm going to speak English slowly so that you all can understand and speak with me. Okay. So right now I'm in a roof and I just came here to spend some time with you and I can do my speaking practice as well. Okay, it's very sunny day today. The sun is shining very good. So I just thought that I should come here and just see how the weather is, and the weather is really good. I am just sitting here on a roof. There is something like that, like a stone kind of. On that I'm sitting right now, and I'm just looking that how the weather is. And today's weather is really good. It's not raining too much, so I thought it's a good weather to record a video. So I just came here, and I'm going to talk to you on one topic, and the topic is grammar really important or not? If you want to learn English, if you want to speak English, then how much grammar you should know? It is a question which all English learners get. So in today's video, I will tell you that how much grammar you should know to speak English. And one more thing is, okay, so grammar is not very important, but yeah, you should know a basic grammar for speaking English. It doesn't mean that you should know tons of vocabulary. You don't need to know very grammar for speaking English. And especially if you are a beginner, then you should really not pay more attention on grammar. Okay, so this is our slow English practice video. Okay, so I hope that you all should listen, watch and speak. आपको अभी जो भी सुनाई दे रहा है, जो मैं आपसे बोल रही हूँ ना इंग्लिश में, वो सारी चीज़ें आपको सुननी है, देखनी है और फिर रिपीट करना है. ओके, सो यू ऑल शुड लिसन मी एंड रिपीट. Okay, because this method is really good. Basically, first of all, this method is really good to improve English. Okay, so now back to the point that how much grammar I should know to speak English. Then you just need to know basic grammar. It's like very basic. If you have no one, then I'm telling you that what you need to do. Open your phone, go to the ChatGPT and just ask that I'm a complete beginner in English language. Then just tell me that how much grammar I should know to speak English. Then ChatGPT will reply you like this kind of. Okay, so you just need to do all those things. Yes, just do these things and then you will see result. Your English will improve very fast if you do all those things. Okay, so first of all तो ज़्यादा ध्यान मत दो कि ये ग्रामर मुझे नहीं आ रहा है, मैं बोल नहीं रहा हूँ तो शायद उसकी वजह ये होगी वो होगी, ऐसा कुछ नहीं है. In the beginning we all make mistakes, so we should not quit learning because of making mistakes. Okay, because it is really important to not give up. Give up is like your failure. Then why are you learning English if you want to speak English? And we all make mistakes in the beginning, right? So if we quit, then how we will improve? अगर हम अभी रुक जाएंगे ना तो फिर हम बोल ही नहीं पाएंगे, ऐसा है.
तो हमें सबसे पहली बात तो रुकना बिल्कुल भी नहीं है। हम भले ही गलती कर लें बट हमें रुकना बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये तो हो गई ग्रामर की बात कि ग्रामर कितना चाहिए और क्या नहीं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट वी विल डू वन थिंग, दैट जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। टूटी फूटी सही, लेकिन हमें इंग्लिश बोलनी ही है, राइट। You should not think that I am not speaking perfect, I am making mistake, I am making grammatical mistake, my sentence is not structured. And also stop giving excuses to yourself that you are not doing. Yes, confidence is very important in it. If you are losing your confidence, it means that you are failing, you have failed. Okay, so please make mistake and learn from your mistake. दिस इज़ दी सोल्यूशन। मैंने भी इंग्लिश ऐसे ही सीखी थी। मैंने शुरुआत में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करी थी, तो मैं वो सारी मिस्टेक्स से सीखती थी और फिर मैं अपनी जर्नी वापस चालू कर देती। तो आपको भी वैसे ही करना है, जस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड गो अहेड। ओके, लाइक राइट नाउ आई एम alone and I'm speaking English. So like that you should also if you are feeling shy while speaking English in front of anyone, then you just come to a place where is a no one is going to see you, where is a no one is going to judge you, and just speak English with you. Like just speak English with yourself, talk to yourself. Okay, I also improved my English like this. I had no English teacher. I have not spent any single rupees on learning English. I learned English by my own way. A lots of people were saying me that listen English news, read English newspaper, your English will improve and all. But at the point I realized that this thing is not going to help me. So after that I choose to learn English by my own way. Okay, because all of us were just misguiding me, and because of that I took long time to speak English. Okay, so आपको ऐसा नहीं होना है, जो मैं बोल रही हूँ आप वही करोगे और उसके बाद आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। Okay, if you want to know anything about me, about my English journey, how I learn English and all, then just comment below. Any queries, like if you have any queries related to English, just मुझे comment कर दो, मैं आपको reply कर दूँगी। और अब अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, सो दैट कि मैं उसका आपको वो प्रॉब्लम कैसे फेस करनी है वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट कर देना। ओके, मुझे एक और चीज़ के बारे में भी बोलना था कि मैंने ये भी सुना है कि मैं ना थिंक इन इंग्लिश नहीं कर पाता, लाइक आई कांट थिंक इन इंग्लिश। लाइक मुझे कमेंट भी आया था कि मतलब मैं थिंक नहीं कर पा रहा हूँ इंग्लिश में। सो मुझे लगा कि इस वीडियो में बता ही दूँ कि क्या करें। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी सोचते हैं हमारे दिमाग में, वो हमारी नेटिव लैंग्वेज में होता है, राइट। जो भी हमारी नेटिव लैंग्वेज है हम उसी में थिंक करते हैं, राइट। तो हमें ना सिर्फ वही चेंज करना है। लाइक अभी मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ, अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो उसमें अब मुझे आगे ये बोलना है, इसके बाद मुझे ये बोलना है। सो लाइक ये अभी मेरे दिमाग में चल रहा है। सो अभी ये सारी चीज़ें मैं इंग्लिश में सोचूंगी और फिर वही बोलूँगी। लाइक ऐसे आपको, आप जैसे हिंदी में सोचते हो ना डायरेक्टली, वैसे ही आपको इंग्लिश में सोचना है। ओके, so like the way you think in Hindi, like the same you will think in English. Okay, and if you are not able to do this, then there is also one solution. Think slowly. Yes, रेस नहीं लगानी है हमें, एकदम आराम से धीरे धीरे सोचेंगे। अगर मुझे नहीं समझ आ रहा है कि अभी मैं क्या बोलूँ, ऐसा आपने सोचा, धीरे धीरे ट्रांसलेट करो, व्हाट शुड आई से, हो गया, हमने थिंक कर लिया इंग्लिश में। ऐसे ही लाइक धीरे धीरे हम जाएंगे, एकदम धीरे से, क्योंकि मैंने देखा है कि हम जब धीरे धीरे सीखते हैं ना, तब हमें बहुत अच्छे से चीज़ें याद रह जाती है।
सो वैसे हमें एकदम फास्टली सब कुछ नहीं आता, हम कोई मशीन थोड़ी ना है कि एक बार बोल दिया तो दिमाग में बैठ गया। सो वैसे एकदम धीरे धीरे सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। ओके, सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने हिंदी 50% यूज़ करी है एंड आई यूज़ इंग्लिश 50% इन दैट। ओके, सो आई विल मेक वीडियोज़ लाइक दिस बिकॉज if I speak English completely like 100%, then some people will not get, cause of that I'm speaking 50% Hindi and 50% English, so that all will get what is the exact I want to tell you. Okay, so if you have any queries related to English, then just let me know in the comments. I will give the solution for your struggle. Okay, so guys, that is for today. We will see in our next. Till then, bye, and let me know in the comments what you want to watch the next. Bye.